चलो आई थिंक लेट्स बिगिन सेशन एनीवेज हम रिकॉर्डिंग ऑल्सो तो वो देख भी सकते हैं आज. So essay is your first paper and it's of 250 marks, two essays. And the good thing about essay is कि the range of marks can go till like 130s if you write a phenomenal essay. सो एज अपोज टू जी एस वन जिसमें 100 क्रॉस करना मुश्किल होता है या फिर जी एस थ्री जिसमें 90 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे कैन बी हेल्प टू लाइक मेक योर एज. सो दैट इज़ वाई ऐसे के लिए प्रिपेयर करना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. एंड मोस्ट पीपल थिंक कि जी एस का ही इंफॉर्मेशन इफ़ दे राइट इन द एसेज तो दे विल स्कोर गुड, बट ऐसा नहीं है बिकॉज ऐसे इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. तो देर आर अ फ्यू थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ गुड ऐसे. तो उसके लिए सबसे पहले वील ट्राई टू रीड द UPSC नोटिफिकेशन इटसेल्फ. Candidates may be required to write essays on multiple topics. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. So इसमें से कुछ keywords हैं. Closely to the topic. Then orderly fashion. Then conciseness, and then effective and exact expression. इस पे आपके मार्क्स अवॉर्ड होते हैं. तो इफ़ फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अबाउट समथिंग एंड यू आर नॉट फॉलोइंग क्लोजली टू द टॉपिक, अगर आप इधर उधर वॉन्डर हो जाते हो तो योर मार्क्स विल बी कट. लेट्स सपोज कि यू हैव आइडियाज़ बट यू डोंट प्रेजेंट देम इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल फैशन, तो योर मार्क्स माइल बी पेनलाइज्ड. उसके बाद में यू हैव टू बी कंसाइज. दैट मीन्स कि नो फ्लावरी लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड एज सच, सो यू डोंट हैव टू फील बैड अबाउट दिस थिंग कि योर वोकेबलरी माइट नॉट बी गुड, बट योर एक्सप्रेशन शुड बी इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट. यानी कि आप शॉर्ट सेंटेंसेज लिखो एंड एकदम यू हैव टू बी वेरी इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट. सो ऐसे इज बेसिकली अबाउट एन आर्ग्यूमेंट एंड यू हैव टू जस्टिफाई इट. You have to keep this in mind कि there will be a problem statement for the essay which you have to justify through various examples. That is the basic premise of the essay. अब for example let's take this one. Inspiration for creativity springs from the effort to look for the magical in the mundane. Right? Now before we start writing, I will introduce to you certain frameworks which will not be just useful for the essay but very very important for your GS answers also. ठीक है? Because what happens is कि GS के papers में a lot of the times some part will be from static, some part will be from current affairs. सो वो करंट अफेयर्स जो आप पढ़ के गए हैं, यू विल हैव अ वेरी प्रिपेयर्ड स्ट्रक्चर, वेरी प्रिपेयर्ड कंटेंट जिसको आप एज इट इज़ छाप के आएंगे. सेम गोज फॉर स्टैटिक. लेट्स सपोज प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, सो यू नो कि क्या क्या क्लॉजेज लिखने हैं, कैसे रिमूव होता है प्रेसिडेंट, कैसे इलेक्ट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे कंस्टिट्यूट होता है, सीक्रेट बैलेट से होती है वोटिंग, डा डा डा. यू विल हैव ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत. And then maybe if you have read the current affairs, so you can integrate some of the current affairs कि in the recent elections XYZ चीज़ happened. That will fetch you some extra marks. Now, any GS answer or essay for that matter will have the following things: introduction, conclusion. These are the two important things. By the way, I will tell you guys कि introduction in both GS and essay have fixed marks. So for example, अगर 10 marker question है तो it's quite possible that 1 marks will be fixed for introduction and conclusion. So if you miss out on writing introduction and conclusion, your marks will be cut. So you have to not only make sure कि introduction और conclusion रहे, but also to make sure कि वो काफ़ी ही different हो, काफ़ी unique हो. And this goes for essay as well. Then it will have the following things: strengths, weaknesses, and opportunities. ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि you will have to do a SWOT analysis
ऑफ एनीथिंग रिक्वायर्ड. थ्रेड्स को भी वीकनेस में काउंट कर लो. तो दिस इज़ द बेसिक प्रेमाइज कि जब भी आप कोई मेंस के लिए पढ़ रहे हो कोई भी टॉपिक, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रीडिंग, पुराने एग्जांपल ले लेते हैं प्रेसिडेंट सिलेक्शन, तो यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्वोट एनालिसिस कि स्ट्रेंथ क्या है. फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इज डन थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन, राइट. वीकनेस ये हो सकती है कि इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट्स को नहीं इंक्लूड किया जा सकता है. अपॉर्चुनिटीज माइट बी हाउ कैन द प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल बी रिफॉर्म्ड एंड हाउ कैन द इलेक्शंस बी मेड मोर फेयर, एंड द थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, दिस कैन बी, ये सब कंटेंट जो है वो कोई भी कंपाइलेशन से मिल जाएगा. GS2 के लिए इन द कमिंग डेज आई विल शेयर सम ऑफ द टॉपिक्स जो कि मेंस पर्सपेक्टिव आपको देगा. नाउ कमिंग टू द फ्रेमवर्क्स, टुडे आई विल डिस्कस मेजरली 3 और 4 मेजर फ्रेमवर्क्स. सबसे पहला होगा पेस्टल अप्रोच, सेकेंड होगा स्टेक होल्डर, थर्ड होगा टाइम अप्रोच. अब यूजुअली in a GS answer you will be able to use one of them, and in your essay you can use all 3 at once because you have the space and the word limit. सबसे पहले we'll talk about the pestle approach. ये वाले टॉपिक को अपन लेके we'll develop. Let's take out the keywords from this topic. Inspiration, creativity, effort to look for the magical in mundane. Now let's give us 1 or 2 minutes to think of कि इन चीज़ों के क्या क्या implications हो सकते हैं. इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हाट थिंग्स, ठीक है, हाउ वेयर व्हेन, ये सब चीज़ें. क्रिएटिविटी टू डू व्हाट, अगेन किस किस एरियाज में क्रिएटिविटी अप्लाई हो सकती है. देन मैजिकल इन द मंडेन, इन व्हाट ऑल मैनर्स. अब इन क्वेश्चंस को आंसर करने में पेस्टल फ्रेमवर्क इज वेरी यूजफुल. सो P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T stands for technological, E stands for environmental, and L stands for legal. Right? Now, let's start thinking about inspiration. So, political inspiration. We can talk about the constitution, how our constitution is inspired from various other constitution. It was made by ransacking all the constitutions in the world. Then we can talk about political models. Let's suppose कि when you read ancient history, so you will see that some of the political models which were existent in like Sabha and Samitis, those were democratic even in the times of like 1900 BC or somewhere. So when you read the Vedic age, you'll see that democracy was still existent, right? So that can be a political inspiration. Then we have economical inspiration. We can have economical models, a mix of socialism and capitalism, right? Then we can have CBDC, which we are recently implementing, central bank digital currency based on crypto, right? Now this we can bifurcate further. We have the story of Satoshi Nakamoto, ki, how he came up with the cryptocurrency. Then we have social. Let's come on to that. We have technological, we have environmental, we have legal. Now similarly, we can think of various points. Let's suppose you think of 3 points for each heading. What you'll have is 18 points right now, right? You have to write an essay of approximately 11 pages. That means your first page will be introduction,
which is usually an anecdote. Because anecdote जो होता है that sets a good premise for the essay. ठीक है, तो कोई आप हिस्टोरिकल एनेक्डोट ले सकते हो, यू कैन टेक अ पर्सनल एनेक्डोट, यू कैन टेक समथिंग फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, यू कैन टेक समथिंग फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री. तो ऐसे ऐसे आप अलग एनेक्डोट्स को फॉलो कर सकते हो. और वेरी सिंपली यू कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक इटसेल्फ. यू कैन टॉक अबाउट द इंस्पिरेशन or you can talk about creativity. You can begin with that quote of Albert Einstein which says that imagination is far more important than intelligence or something like that. So similarly, pestle approach se you come up with topics. Now pestle is further bifurcated into the time approach. Time approach basically says that you have to talk about history, present and future. अब इसका जीएस में भी सेम एप्लीकेशन है. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू गेट समथिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट लाइक एनी स्कीम और एनीथिंग. You can talk about its historical context, you can talk about how it's being implemented in the present, and you can talk about the future of it, how it is going to impact and what can the changes be made. You already have 5 subheadings ready. अगर 5 के अंदर if you write 3-4 points each, you can have approximately 15 to 20 points for your GS answers. Then we have the stakeholder approach. Now किसी भी situation में stakeholders are usually few people. For example ये inspiration और creativity की बात करें तो let's go on a level by level basis. First we have the individual, then we have the family, then we have the society, then we have the nation, and then we have international. Now let's see कि इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे कैसे हो सकती है. राइट, वी कैन टॉक अबाउट द जुगाड़ मेंटालिटी. You can like bring in a very unique example of how you were like facing a problem and you solved it very creatively, and that would be the perfect example ki how you found the magical in the mundane. Right? Then you can come to family. You can apply the same to your mother or father. They were facing a problem in their professional life or personal life, and then how they came up with a solution. Maybe they were facing a problem in their professional life and they found a very unique solution to it. Right? In society, we have many such examples. For example, the example of that person who came up with like mass manufacturing of sanitary pad, Akshay Kumar ki jiski movie thi, right? You can talk about that. Then on a national level, it is very nicely implemented. We can talk about many startups like Truecaller or anything else. In the technological domain, again वो intersect कर जाएगा. Then in the international domain, so environment की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. Environment में for example we have Chipko movement. How without wasting any money, like people found out a very unique way to save trees. And that it was inspired from the Gandhian movement. Now for essay, in addition to pestle, there are a few more things that you can add. एक होता है historical, ये time approach से borrow कर सकते हो आप, और एक होता है literary. This is a very unique aspect. If you include this in your essay, you will fetch definitely higher marks as opposed to others, because these are well-known frameworks, pestle and everything, and these are the subheadings which intersect with your GS papers. So it's very easy to make subheadings as per these frameworks. But there are some things which are not covered in your GS papers, like literary. So if you can come up with something which intersects with literature, right? So in this case, you can talk about William Wordsworth. वर्ड्सवर्थ की वो पढ़ी थी कि वो नेचर से बहुत इंस्पायर हो जाता था. It was a sudden overflow of creativity for him whenever he used to write poems.
So he was definitely inspired by magical in the mundane. You can talk about J.K. Rowling, ki how she was traveling in a train and she got the inspiration for Hogwarts Express, and that is how it changed the life of so many people. In fact, you can begin with this. This is a very nice intro for this. तो इस तरीके से when you have come up with 15 to 20 ideas, now what you can do is you can arrange them in a very linear fashion. For example, we first start with the J.K. Rowling ki history, right? Then secondly, we can cite to connect the inspirational and mundane. Then we can come up to Wordsworth ka example, right? Then we can talk about Albert Einstein, ki how he came up with the theory of general relativity, and like it was basically from observing things around him and like things falling. Then Albert Einstein ke also pehle we can have Isaac Newton. Totally forgot about him, right? It will be a more natural flow to the essay. Then speaking about technology, right? Technology mein we were talking about startups, how we have innovative startups who are solving mundane problems. You can take inspiration from Shark Tank. You must have seen lots of startups which are doing something innovative. और टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है? Anybody has any ideas? Anything. चलो आगे बढ़ते हैं. Then we have CBDC and crypto के बारे में बात कर सकते हैं. Then we can branch out to environmental innovation, right? We can talk about the technological intersection of environment, how we have technologies like carbon sequestration, कि वो कार्बन कैप्चर करके उसको वो किया जा रहा है, मतलब they are storing carbon artificially, and that is being inspired from the plants itself, because plants are taking in carbon dioxide and giving off oxygen. So उसका basic inspiration is this only, and that is such a mundane thing, and with the power of your words you can put it very nicely, I feel, along with quotes and suggestions, right? And then now that we have entered into the environmental domain, now we can mention Chipko movement. Chipko se you can connect Gandhian, and then from Gandhian you can talk about political, right? Title of the essay is Inspiration for Creativity Springs from the Effort to Look for the Magical in the Mundane. Right? उसके बाद में we can have social में, like we discussed, we have multiple social innovations. वो sanitary pads वाला चीज़, इसमें you can bring in from pop culture also. वो you can quote that Akshay Kumar का movie. By the way, pop culture references are allowed and highly rewarded also if they are very relevant. And then 10th में we can talk about legal innovation, right? We can talk about some of the Supreme Court judgments, like for example, right to environment. Like you can talk it from like a different point of view also. Acha, by the way, before we like conclude this essay में there should be another flow as well, which is thesis, antithesis, and synthesis. This is basically the dialectic of Marx, if you don't know. So
what your essay is, कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि क्रिएटिविटी जो आती है वो मैजिकल चीज़ खोजने से आती है मंडेन में से. मतलब मंडेन में कुछ मैजिकल चीज़ है विच इज़ गोइंग टू क्रिएटिविटी. नो यू हैव टू जस्टिफाई दिस यूजिंग एग्जाम्पल्स, राइट. Essay is basically an argumentation in which you are presenting your arguments to justify this point. But it's not always necessary कि creativity हमेशा ही mundane से आए. So this will be your antithesis. An antithesis of your essay should also have 1 or 2 pages dedicated to it, because it brings a holistic picture into your essay. You're not only arguing your side of the argument, you're also acknowledging the other side of the argument, and then you are refuting it further on. So here you can talk about how some of the scientists had to go to a lot of lengths to bring out creativity. For example, you can talk about innovation in the quantum domain, or you can talk about the CERN accelerator, the finding of Higgs boson, right? These things were not so mundane. These things were achieved after a lot of research. So इनके लिए you had to work hard. So you can draw like a verbal picture कि like some areas of creativity are only opened when you knock on those doors. You know, so this can be a very good phrase to use in your antithesis. And then with the amalgamation of both of these things, you bring out a synthesis of your essay, which is like a very eloquent bridging of these two things. कि हाँ, some areas are required, but in the end, like what inspires us is the mundane things. And then on, इसके बाद में, you should talk about 2 things: way forward or application. Your last 2-3 pages of the essay should be about the, as speaking from the time perspective, should be futuristic. So for example, you can talk about some of the things. Let's take the problems of India, right? Poverty, hunger, and then inequality. Let's take hunger. इसके लिए बहुत बढ़िया आइडिया है कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेबसाइट्स लाइक क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स लाइक केटो और किकस्टार्टर, राइट? And then we have this culture of organizing bhandaras, and it's very prevalent, but somehow this innovation has not been technologically innovated to be made online. Like what if somebody wants to, like, you know, organize a bhandara and they could donate online for this? Like you can use this mundane example कि like हर कोई चलते फिरते इन चीज़ों को होते हुए देखता है, but being inspired by this, we can amalgamate technology to outsource this and like make it more reachable. This can be your innovation. This is the aspect जहाँ पे you can bring in some futuristic conclusions to your essay. And then as you read more and more, so you'll encounter some words like government की policy, like Narendra Modi is telling that this is not a decade, this is a decade for India, right? Or we have सबका साथ सबका विकास. Or we have vocal for local. This can be a very good intersection with your essay. So we can use these phrases towards the end to align our policy with the government. ये भी एक ज़रूरी एस्पेक्ट होता है ऐसे का. Like you have to use 1 or 2 phrases from government's policies so that you show them कि you are well aware of them and how you can use your creativity as a bureaucrat to implement these policies. Right? So I'll summarize once more.
सबसे पहले पेस्टल अप्रोच, बहुत बेसिक अप्रोच लेना है. वी हैव पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट एंड लीगल. देन एडिशन में इसके वी हैव टू थिंग्स, historical and literary approach. And then we have the stakeholder. We go from the very basic unit of the society: individual, family, society, nation, international, right? And then we have the time approach: history, present and future. Then we have a way forward and applications for that aspect, right? And then we have also have the thesis, antithesis and the synthesis, this being a prominent example. Anything else? There is something that I wanted to add. Another framework that you can use is institutional framework. Like for example, if there is something जो कि थोड़ा सा tangible ऐसे है, right? For example, you have a topic which is intersecting with environment. तो you can talk about the institutions involved with environment. जैसे कि environment में सबसे पहले UNEP हो जाएगा, then you could have United Nations, उसके बाद Ministry of Environment हो जाएगी, then we can have local farmers, we can have environment research institutes, and so on. This institutional framework is usually a great example for GS2. For example, आपको कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो you can talk about the constitutional aspect, then you can talk about the Supreme Court aspect, you can talk about the ministerial or the parliamentary approach to it, then you can talk about like the grassroots level, the departments, and then another institution would be the individual or the beneficiaries themselves. This framework is great for governance के questions, because you're talking about, like for example, you had that question ki we had that question ki welfare schemes are discriminatory in nature or what. So we can bring in कि article 14 से start किया अपन ने, then we can bring how right to equality or जो social justice है is a fundamental right. We can quote one or two case laws, and then we can talk about the parliamentary policies. We can talk departments क्या कर रहे हैं, कैसे improve हो सकते हैं. Then we can talk from the beneficiaries perspective. Now these are add-ons. You obviously have to answer the question which is asked, but these things help you. Like for example, आपके पास कोई भी question है, you have 10 solid points for it to fill the meat and potatoes of it, like एकदम core chunk of the question. But obviously you have to write 3 pages or 2 pages, so you need 5 to 10 more points. Now these headings help you generate more points. This is the factor. Because होता क्या है कि you have to go in the examination hall with some framework in your head. You have all the content and the facts in your head, but you have to fill it as per the demand of the question. For example, वो जो welfare scheme वाला question है कि वो discriminatory है कि नहीं nature में, it's all about article 14 कि whether they violate article 14 or not, right? So if you know the like the discrimination like race, religion, caste, sex, place of birth, so मतलब कि you can argue very nicely. These can be your subheadings, these can be your subparts कि these welfare schemes don't violate these issues. And then you can maybe bring in the example of SECC. ये थोड़ा high level है, don't worry about it. 25 वाले लोग, you'll read about it कि how it is a caste based census, so it can be discriminatory in nature and it has been in criticism. बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा भी था कि SECC थोड़ा सा violatory है, discriminatory है. तो this is how, like you know, you think about mains answers or think about the essays in general. So whenever you're reading something next time, try to, like you know, think of them in these subheadings. Ki for example, you're reading about right to freedom of speech. So what are like constitution ke angles, what are Supreme Court judgments about it,
पार्लियामेंट्री राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, तो उसमें यूल गेट 105 एंड 194 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जिनको बोलते हैं. Then we have various departments which might be promoting freedom of speech or restricting freedom of speech. For example, we have the censor board of the country. तो वो कहीं ना कहीं freedom of speech restrict करती है. And then we have other like departments or agencies like Freedom House. There are various reports which are published for freedom of speech जो कि measure करती हैं. Then we have the individual beneficiary level. तो इससे क्या होगा कि when you try to have some frameworks to your content which you're reading, तो you will generate multidimensionality. And this is the sine qua non, like it is imperative for scoring good marks, both for essay and for GS answers, because some people will be restricted to what is written in Lakshmikant, while you will be able to go like 1 or 2 steps beyond this thanks to these frameworks and various angles which you can apply to a question. Now, how to use these frameworks in various questions, that is a thing of practice. कि कहाँ पे कौन सा framework अच्छा apply होगा. Like for example, pestle is very well applied in governance questions, or this is also very well applied in governance questions. But for economy के questions, there might be a different framework that might come to use. And there are different frameworks for disaster management, security and ethics. हाँ, ethics could be another angle which you can explore in essay. Now, another बहुत ही बेसिक सा जो फ्रेमवर्क होता है वो होता है जीएस पेपर बेस्ड वाला फ्रेमवर्क. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू राइट एन essay ऑन इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी. दिस इज़ वेरी जुवेनाइल एंड वेरी बेसिक, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको तभी यूज़ करो when you are run out of topics and you have nothing else to think of. तो you go by GS paper 1. इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हिस्ट्री आ जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा, देन यू हैव जोग्राफी. हाँ देखो, एक और अच्छा आ गया. इफ़ यू हैव रेड जोग्राफी तो यू कैन टॉक अबाउट दैट वो कॉन्टिनेंटैलिटी वाली थ्योरी, कि हाउ इट वॉज ऑब्जर्व वेरी मंडेन, कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सेम इधर से हैं, तो लाइक अ थ्योरी केम अप एंड दैट इंस्पायर्ड द क्रिएटिविटी फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. यू नो, लाइक दिस कैन बी अनदर एग्जाम्पल. एंड देन वी हैव सोसाइटी, तो वो सोशल में कवर हो जाता है. देन यू गो फॉर GS2, देन यू गो फॉर GS3, राइट. GS3 में वी हैव सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में इफ़ यू नो अबाउट समथिंग लाइक यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल आर्मी की कोई स्ट्रैटेजी है विच इज़ इंस्पायर्ड बाय लाइक अ फॉर्मेशन ऑफ एनिमल्स और इंसेक्ट्स. कई बार ऐसा रहता है, इफ़ यू आर अ डिफेंस, लाइक आपको डिफेंस में इंटरेस्टेड है, तो यू माइट बी नोइंग समथिंग कि लाइक सम डिफेंस स्ट्रैटेजीज आर इंस्पायर्ड बाय एनिमल्स एंड देयर फॉर्मेशन, लाइक ईगल्स वगैरह कैसे उड़ते हैं एंड लाइक सम ऑफ द फाइटर जेट्स. तो यू नो दैट कैन बी एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द मंडेन. देन वी हैव डिजास्टर मैनेजमेंट. इसमें बहुत सारी, व्हेन यू रीड अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट तो यूल गेट लॉट्स ऑफ न्यूज़ की बहुत सारे लाइक नॉर्थ ईस्ट में उधर पे जो फ्लड्स वगैरह आते हैं उसके लिए दे हैव वेरी इनोवेटिव थिंग्स, लाइक दे यूज़ नेचुरल चीज़ें. लाइक मेघालय में वी हैव दोज ट्री ब्रिजेस, तो वो स्पेशली उगाए जाते हैं. वैसे लाइक देर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक ट्राइब विच यूजेज द नॉलेज, लाइक ट्रेडिशनल नॉलेज, टू लाइक यूज दोज ट्री ब्रिजेस. एंड सो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी नाइसली प्रिजर्व्ड, एंड वहाँ पे लाइक सीमेंट का उपयोग और अदर पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ आर नॉट हैपनिंग. तो यू नो यू कैन यूज दीज एग्जाम्पल्स. देन वी हैव इकोनॉमी, देन वी हैव साइंस एंड टेक, देन व्हाट एल्स इज देयर, एनवायरनमेंट, वो पेस्टल में हो जाता है. देन वी हैव GS4 एथिक्स. GS4 के एथिक्स में यू कैन हैव लाइक साइकोलॉजी के कुछ इश्यूज ला सकते हैं आप, गवर्नेंस के कुछ इश्यूज ला सकते हैं, एंड देन एथिक्स तो है ही.
अगर कुछ बहुत ही philosophical से ऐसे है तो you can bring in some ethical examples also and anti-ethical examples also. So when you're talking about the antithesis, maybe you can include some negative examples, but not a lot, because our essay should have an overall positive tone. So this is all about frameworks and writing essays. Now, how to find examples? एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे न्यूज़पेपर से. अनदर थिंग इज कंपाइलेशंस. एक बहुत ही अच्छी कंपाइलेशन है राउज की ऐसे कंपस विच आई शेयर विथ यू आफ्टर दिस सेशन. देन वी हैव जनरल स्टडीज. देन वी हैव ऑप्शनल. ऑप्शनल में कई बार जो थिंकर्स होते हैं उनकी बहुत ही यूनिक स्टोरी होती है. लाइक सम पीपल हैव डन वेरी अमेजिंग रिसर्चेज एट वेरी लाइक यू नो बहुत ही दूर दराज जाके एंड दे वेर इंस्पायर्ड बाय वेरी नाइस थिंग्स. तो ऑप्शनल में कई बार बहुत यूनिक कंटेंट मिल जाता है. एंड देन यू हैव डॉक्यूमेंट्रीज. बट सबसे बेस्ट जो चीज़ आपको मिलेगी वो न्यूज़पेपर्स में ही मिलेगी. Especially if you are reading the Sunday or the Saturday edition. So what will happen is कि कोई like commemorative articles आएंगे, like somebody died and they are commemorating them, and कोई unique मतलब कि something happened 40 years ago या फिर उसकी 50th anniversary है. So there will be articles on that. For example, केशव नंदा भारती की अभी 50th anniversary थी 2023 में, तो there were a lot of articles on that. Then MS Swaminathan was awarded this Bharat Ratna. सो उस उनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स थे फ्रॉम वेयर ही वॉज इंस्पायर्ड बाय एंड क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. सो देर आर अ लॉट ऑफ वेरी लाइक इंडिविजुअलिस्टिक स्टोरीज बिहाइंड दीज पीपल. तो वो यू कैन लाइक टेक आउट वेरी स्मॉल स्निपेट्स. देन देर इज एन अमेजिंग रिसोर्स कॉल्ड स्कूल ऑफ लाइफ. ये आप यूट्यूब में इसका चैनल देखें. अमृतांश सिंह साइकोलॉजी पढ़ रहे तो आई थिंक ही मस्ट नो अबाउट इट. ये बहुत ही प्यारा चैनल है. इसमें प्लेलिस्ट हैं अलग अलग लाइक पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, देन लिटरेचर के ऊपर. और उसमें उन्होंने अलग अलग लोगों को लेके बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि मार्क्स की थ्योरी क्या थी और कीन्स की थ्योरी क्या थी. देन इकोनॉमिक्स में यू हैव लॉट ऑफ इकोनॉमिक. लिटरेचर में जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं लाइक जिनको यू कैन कोट, for example Tolstoy ko I recommend quoting because Gandhi was also inspired by him, and so it always like you know instead of directly quoting Gandhi you can quote who inspired him. Then another great resource is Goodreads. Goodreads is great for quotes. So what you can do is कि you can go to Goodreads, search a book. हाँ, Better India is also amazing. Better India is also great for एथिक्स ऑल्सो. एथिक्स के लिए भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स मिलते हैं. गुडरीड्स में यू कैन लुक अप अ बुक और उसका एक कोट सेक्शन होता है. तो कोट सेक्शन में यू कैन लाइक गो एंड मतलब कि यू कैन टेक आउट यूनिक कोट्स. सो व्हाट विल हैपन इज कि इंस्टेड ऑफ लाइक जो कंपाइलेशन से कोट्स निकालते हैं लोग बाग, यू विल हैव योर ओन थिंकर्स. सो फॉर एग्जाम्पल इस साल व्हाट आई डिड वाज कि फॉर एग्जाम्पल आई नीडेड हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स. तो मैंने इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर गांधी, नेहरू, दीज वाई लाइक आई वेंट फॉर सरोजनी नायडू. मैंने उनके कोट्स निकाले एंड आई टुक आउट कालिदास के कोट्स. आई यूज दीज टू इन माई एसेज बिकॉज मुझे पता था कि ये कोई नहीं कोट कर रहा है. तो आई वेंट टू गुडरीड्स, आई सर्च्ड उनकी बुक्स, अभिज्ञान शाकुंतलम और सरोजनी नायडू की जो भी बुक्स थी. सो व्हाट दिस डिड, क्योंकि एक तो ये फ्रीडम फाइटर थी और दूसरा लाइक शी इज़ अ फीमेल, तो एक फेमिनिस्ट एंगल आ जाता है ये. सो यू कैन ऑल्सो लाइक एनी पर्सनैलिटी विच यू लाइक, यू कैन गो टू गुडरीड्स. उनने जो भी पॉपुलर बुक्स लिखी हैं यू कैन टेक आउट कोट्स फ्रॉम देम विच एवर यू लाइक. एंड इट्स मच बेटर कि इफ़ यू आर इंस्पायर्ड बाय देम तो वो थोड़ा लाइक इनोवेटिवली आएगा वो चीज़. बिकॉज आई यूज टू राइट फ्रॉम द बुक्स दैट आई हैव रेड और डॉक्यूमेंट्रीज दैट आई वॉच्ड, एंड आई फेल्ट कि वेन एवर आई गेव टेस्ट सीरीज तो उसमें भी मुझे अच्छे रिमार्क्स मिलते थे दैट इट इज़ अ यूनिक एडिशन. नाउ सम थिंग्स टू कीप इन माइंड.
don't criticize the government. You are giving a government exam, even subtly, even like by implying it in between the lines, don't do it. It is heavily penalized, right? Don't take a controversial stance. Like for example, it can be that you fossil fuels are important and they should not be phased down, or don't take an anti-feminist stance. Never ever criticize feminism. Then always have a positive tone. हाँ, एंटी टेक्नोलॉजी ऑल्सो लाइक दिस, लाइक सी गवर्नमेंट जिस जिस एरियाज में काम कर रही है ना, यू हैव टू सपोर्ट देम. इफ द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया, यू जस्ट नॉड योर हेड एंड से हाँ भाई डिजिटल इंडिया बढ़िया है. लाइक इफ दे आर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स, हाँ भाई बढ़िया है. CBDC आ रहा है क्रिप्टो करेंसी को, इफ दे आर पुटिंग ऑन 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी, येस क्रिप्टो करेंसीज आर बैड. Like even if you have like 10-14 lakh in Bitcoin, then also they are bad. Then always stick to the topic. तो इस चीज़ के लिए what I used to do is कि since जैसे कि मैंने यहाँ पे ये निकाल के रखा है, कुछ कुछ keywords हैं इसमें, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी, मैजिकल और मंडेन. तो what I will do is कि मैं ना इन चारों वर्ड्स को बार 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 अपने ऐसे में यूज करूंगा, एंड आई विल अंडरलाइन देम इन ईच पैराग्राफ. सो उससे एग्जामिनर गेट्स टू नो कि हाँ भाई ये टॉपिक से चिपक के चल रहा है. दिस इज अ ग्रेट वे टू लाइक स्टिक टू द टॉपिक. इट इज वेरी विजिबल, it is very apparent, and so what you have to do is you have to use these keywords in each paragraph and you have to underline them so that you are always within that fine line, like you're not diverging from the topic a lot. Then end on a high note. This is also important. And close the loop. For example, you began with the example of J.K. Rowling. You kind of like bring her towards the end and then you leave it on a positive note. Like you connect the dots. And this gives the feeling of very like holistic completion to your essay. Right? So this I think should clear a lot of doubts about the essay. And कहाँ से collect करना है, that also I have said. How to write the essay. Now, one thing about language also कि short sentences should be used, because the longer your sentences are, उतना थोड़ा वो drag होता है पढ़ने में. So short sentences are very nice. They like give a feeling of being on the edge. They give a feeling of like interest. मतलब it is very crisp, and you are also following that what directive of the UPSC कि concise रहना है, like effective होना है. So your argument should be strong. You bring in more multidimensional examples and you support your argument with short sentences. This is it. Any doubts? कोई डाउट नहीं? चलो सही है. भैया what about the vocabulary? Vocabulary simple रखनी है यार, ज़्यादा हाईफाई नहीं जाना है. मतलब it should be sophisticated but also not very flowery like literature वाली language, So मतलब जैसे I'll tell you, this is kind of my expertise because I'm a writer by profession also. So for example, avoid the use of very. Like it is very bad. Don't write it like this. Like you can use other words like critical, or like use other words like extremely,
और what else, you can use words like obnoxious. मतलब just try to avoid थोड़ा सा जो juvenile language होती है like class 6 7th वाली. You have to go a step beyond. For example, you're writing about like problems, है ना, to use words like bottlenecks or what other can be for problems. Bottlenecks usually is a bureaucratic word. Like ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में बहुत यूज़ होता है, राइट? लाइक हिकअप्स, लाइक यू यूज मेटाफर्स बेसिकली, है ना. तो मतलब इट्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज कि किस तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल यू टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल चीज़ें तो यू कुड लाइक हिकअप्स को यूज़ कर सकते हो. बट यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक अ फॉर्मल थिंग तो यू कैन यूज़ बॉटलनेक्स. लाइक गवर्नेंस की चीज़ें हैं या फिर थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इशूज़ हैं तो bottlenecks is a much better suited word. But if you're talking on a personal level, like there were a lot of hiccups in between my studies, so that flows. तो vocabulary के hacks जो हैं I'll keep on sharing when you write your essays, and like if you plan on sending it to me, तो मतलब we'll go through it on a personal level. नहीं, English के बीच में you should not use Devanagari. If you are like writing something like सबका साथ सबका विकास, then use a translation of it also. Like सबका साथ सबका विकास under double quotes, and then you write its translation inclusive growth in brackets. So it's better to use Indian वाले, and Devanagari तो one should not use. Like English script के बीच में you should not use Devanagari. And if you like Charvak, तो you like write Charvak as Charvak. Now you guys can write an essay on this. Not all who wander are lost. This will be a nice introductory exercise. You have all the framework, all the resources at use. I will send that document जिसमें सारे examples, बहुत सारे quotes हैं. You take help of it. If you have an idea, you find something fascinating, then देख के उसको उठा के अब डाल दो. The main point is like knowing how to use it. Because throughout the year when you're preparing, you'll generate a lot of content. But the main art lies in using it at the right place with flow, with context, and without diverging from the topic. Like to box it in that paradigm of the essay is a much harder thing rather than generating a lot of content. Because content बहुत है. I promise you this content की कोई कमी नहीं होगी. But to put it in that paradigm and like in those lines, and to make it justified कि हाँ you're justifying that topic, that is a harder thing to do. So I think you guys have अगले सेशन तक even if you like जो 25 वाले हैं वो तो लिखना शुरू कर सकते हैं. If you find free time, it will be a fun exercise. You'll like kind of, it will force you to think in multiple dimensions, and whenever you feel like sending the essay, by the way, checking ka I will tell you guys whether I'll be able to check or not, because मतलब for all of you it will be a hectic exercise, but जैसा भी रहता है I'll convey it to you. So by next week I think we'll have essays on this topic, and then we can take up एक आध दो essay, we can discuss it, and जो 1-to-1 होगा उसमें भी we can discuss it. Right? Seems good? Few of my essay. Wait. I'll share it later on. Like मेरे पास copies हैं. I'll share it in the group itself. So this is it for today. If you have any doubts, like not just as per this also, but other things as well, so you can tell me. Like GS में अगर कुछ issues आ रहे हैं, polity में कुछ issues आ रहे हैं, quiz, current affairs. इसी में आपने बोला ना कि मेटाफर्स वगैरह यूज करना है, जोनल वर्ड्स यूज करना है, तो मेरी जो लैंग्वेज रहती है उसमें मैक्सिमम इसी टाइप के वर्ड्स रहते हैं, जोनल टाइप के. तो बिल्कुल मतलब बेसिक के एंगल से मान के चलो, बहुत ज़्यादा उतना यूज़ नहीं करता. मतलब जब लिख रहा हूँ तो उतना माइंड में नहीं आता. अच्छा. तो मैं ये बोलूँगा ना कि आप ऐसा करो कि
जो आप सोच रहे हो उसको बैठ के मतलब कि थोड़ा सा उस पर थिंक करो कि हाउ यू कैन रिफाइन इट। मतलब मैं इसके लिए आई कैन गिव यू सम एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल कि कोई बहुत ही हार्श था, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु वाज वेरी हार्श, तो हाँ, rather you can like using this word you can use कि he had a icy cold heart, like this is more literal। तो ऐसे यू कैन टेक अप वर्ड्स एंड वर्ब्स स्पेशली, क्योंकि वर्ब्स में सबसे ज़्यादा इनोवेशन हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल हाँ, यू मतलब कि यू हैव टू राइट ब्यूटिफुल, कि यू हैव टू डिस्क्राइब सम नेचुरल एलिमेंट, या फिर यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज या समथिंग लाइक दैट। तो यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्ड्स लाइक majestic, grandeur, like you can write the beauty of the Himalayas या फिर rather the grandeur of the Himalayas, you know। तो इस तरीके से you can take up verbs, just अपने डे टू डे लाइफ में आप सोचो और just think of other words that you can use। और गूगल भी कर सकते हैं, like synonyms of XYZ, synonyms of XYZ। एंड ऐसे में तो अभी स्टार्टिंग में आई विल रिकमेंड कि बहुत धीमे धीमे लिखो, यूज़ कंटेंट बाय कॉपी पेस्टिंग इट, but use it in a wise manner, like make sure it is sticking to the topic, it is justifying, and it is has that order and conciseness and flow to it। तो प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ आ जाती है, मतलब देन इट बिकम सेकेंड नेचर कि यू आर फ्लिपिंग वर्ड्स मतलब ऑन स्पॉट। तो ये हो जाएगा, मतलब आई थिंक न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत हेल्प मिलती है इसमें। ये है। एक चीज थी, जैसे अभी व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट दैट मंडेन थिंग्स एंड यू यूज दैट ज्योग्राफी का एग्जांपल, राइट? तो सेम चीज आई वाज रीडिंग लाइक अ फ्यू डेज बैक, बट हाउ डज इट क्लिक एकदम से? ये इसी के लिए तो फ्रेमवर्क्स हैं, मतलब कि लाइक सी मेरे को भी वो क्लिक नहीं किया था, बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दीज फ्रेमवर्क्स, लाइक व्हेन आई केम टू दैट GS1 के हाँ जोग्राफी है, तो इट क्लिक, राइट। तो मतलब उसके दो अप्रोचेज हैं। एक तो सबसे पहली बात कि यू कीप दिस फ्रेमवर्क्स एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स, लाइक यू शुड नो व्हेन टू अप्लाई देम एंड विच टू अप्लाई कहाँ पे, फर्स्टली। एंड सेकेंडली, आप एग्जाम्पल्स जो इकट्ठा कर रहे हो उसके ऊपर यू सिट डाउन एंड थिंक फॉर सम टाइम कि यार इसका कहाँ कहाँ लिंकेज हो सकता है। तो दैट वे इट विल काइंड ऑफ लाइक एसिमुलेट इन योर हेड, तो फिर उसके बाद में आसानी हो जाती है। एक चीज और थी, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू एसे, बट GS2 में मेनली, जैसे अब मतलब जैसे आई एम रीडिंग लक्ष्मीकांत, राइट? तो उसमें यू विल फाइंड टॉपिक्स, जैसे कि आप ले लो फॉर एग्जांपल लेट्स से लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट या एनी अदर सच टॉपिक, राइट? कि CAG के क्या रोल्स एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, राइट, फॉर एवरीथिंग। तो डू यू लाइक शुड बी ट्राई टू मेमोराइज दैट, और लाइक मल्टीपल रीडिंग्स विल जस्ट स्टिक देम इन द हेड? नहीं नहीं, मल्टीपल रीडिंग्स यूजुअली विल लाइक गेट यू टू 70-80% ऑफ द कंटेंट इन योर हेड। मतलब होगा क्या कि अभी फर्स्ट रीडिंग में इट फील्स लाइक अ बिग चंक, बट मल्टीपल रीडिंग्स में योर हेड काइंड ऑफ सेपरेट्स देम इन वेरियस डिमेंशंस, कि कैग जो है इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में ये चीज़ें हैं, एंड देयर इज़ अ सर्टेन स्ट्रक्चर दैट कम्स इन टू प्लेस, कि उनका अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, उनके फंक्शंस, एंड देन एडिशनल चीज़ें, कुछ क्रिटिसिज्म भी है। हाँ, क्रिटिसिज्म भी है। हम्म, एंड आल्सो लेट्स से कि अज्यूम कि जैसे रोल्स में दे हैव रिटन लेट्स से 10 12 और 15 थिंग्स दैट इट डज, राइट? हाँ तो इज इट वाइज टू जस्ट स्टिक टू 5 6, लाइक हैव द नॉलेज ऑफ ऑल 14 15, बट कुछ मेन 6 7 यू कीप इट इन योर हेड, जो कि आप आंसर में उतार सकते हो, एंड हाँ बाकी यू जस्ट कीप इट कि कभी अगर MCQ में पूछ लिया तो मार दूंगा टाइप्स? हाँ इज हाँ हाँ। दैट द वे टू गो, और या फिर मतलब यू ट्राई टू रिटेन एज मच एज यू कैन? यू डेफिनेटली ट्राई टू रिटेन एज मच एज यू कैन, बट कोई फोर्स नहीं है, मतलब उतना जगह भी नहीं रहती है लिखने की, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो यू हैव टू राइट द मेन 5-6 पॉइंट्स, मतलब। ठीक है, थैंक्स। हाँ मृतांश, गो अहेड। Yeah, I had a doubt about gathering material for essays. Like, अब ये है तो क्रिएटिव एक्सरसाइज, सो इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन करने का मुझे कोई फ़ायदा समझ में आता नहीं है। हाँ बट विदाउट कंपार्टमेंटलाइजेशन आप गैदर भी कैसे करोगे मटेरियल, ये भी समझ में नहीं आता। सो मैं क्या करता हूँ, सीधा मैंने एक फोल्डर बना के रखा है, आई मीन एक सेक्शन अपने नोट्स में, कि आई जस्ट डंप एवरीथिंग देयर।
राइट उसमें मैंने 2 कॉलम बना के रखे हैं। सो फर्स्ट कॉलम में आई जस्ट डंप एवरीथिंग, इट कैन बी अ कोट, इट कुड बी अ केस स्टडी एंड एनीथिंग। और उसके बगल में जस्ट जो दूसरा कॉलम है वो मेरा है, मैंने ऊपर तो लिख के रखा है कि इसमें यूटिलाइजेशन में किस चीज़ में करूँगा, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब इसमें यूटिलिटी कुछ लिखने का ज़रूरत है भी कि नहीं है, मतलब इसमें मैं इसको क्या करूँ इसमें। सी इसमें जो सार्थक भी पूछ रहा था ना, इट अलाइंस विद दैट क्वेश्चन कि जैसे एक एग्जांपल लिया अपन ने, उसके बाद उस एग्जांपल पे लेके ना बैठ के थोड़ा सोचो कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल वो एल्फ्रेड वैगनर वाली थ्योरी थी, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो इट कैन बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक डिस्कवरीज, राइट, इट कैन बी यूज्ड फॉर दिस लाइक क्रिएटिविटी और मंडेन चीज़ें, है ना, और इट कैन बी ऑल्सो यूज एज लाइक रेजिलियंस एंड नहीं मतलब कि एफर्ट, because मतलब he must have taken so much effort to like study all those things and he must have put year and then it was his life's work. Then it can be used as like a foundational thing कि how like theories build on foundation, like it is the most like foundation of geography starts from there. तो ऐसे करके मतलब when you have a certain topic तो you can think upon it again and again. तो उसके नीचे यू कैन पुट ऑन टैग्स कि इट कैन बी यूज हियर, इट कैन बी यूज हियर, इट कैन बी यूज हियर, तो रिवीजन के टाइम पे वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, देन इट बिकम्स ईजी कि अच्छा ये टॉपिक है, इसके लिए ये एग्जांपल थे मेरे पास में। चलो आई थिंक दिस इज इट सर फॉर 2025 एस्पायरेंट तो कब से कितना रेगुलरली लिखना है ऐसे, लाइक वीक में एक बार इनफ है, और कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो मैं दे दूंगा, मत चिंता करो। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, चलो लेट्स एंड दिस, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। Thanks a lot. Good night. Thank you.